हीट इंजन क्या होता है? Is a device which convert heat energy into mechanical energy. Heat engine is a device which convert heat energy into mechanical energy. Heat engine may be diesel engine, may be petrol engine, or maybe coal engine, steam engine. These all devices convert heat energy into mechanical energy. Heat into work. So heat engine is a device which converts heat energy into mechanical energy. Heat engine is having three parts. Heat engine is having three parts. One is the source. Next is working substance. And third is sink. And third sink. One is source. The temperature of source is given. The temperature of sink is Q2. Useful verb यानी W. Heat engine is having three parts. One is source. आपको सोर्स को डिफाइन करना. व्हाट इज सोर्स? इट इज द पार्ट वेयर द हीट इज जनरेटेड. Source is the part where heat is generated. Second part is working substance. Second is working substance which absorb heat from the source. Working substance क्या है? The part which absorb heat from the source and convert it into useful work. हीट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करो. वर्किंग सब्सटेंस के बारे में लिखना है आपने. यू हैव टू राइट व्हाट इज वर्किंग सब्सटेंस. जो मैंने बोला, वर्किंग सब्सटेंस इज द पार्ट which absorb heat from the source and not absorb only but convert into useful work, and rest of the heat which it absorbs, rest of the heat is dissipated. Rest of the heat is dissipated to the sink. Rest of the heat rather than यूजफुल वर्क डन के बचने के बाद जो हीट बच जाती है उसको डिसिपेट कर देता है सिंक में. सिंक का काम होता है एडिशनल हीट को ऑब्जॉर्व करना. हीट इंजन के बारे में आप समझ लें, तीन पार्ट है. सिंक का काम है रेस्ट ऑफ द हीट को ऑब्जॉर्व करना. सोर्स का काम है हीट जनरेट करना. वर्किंग सब्सटेंस का काम क्या है? हीट ऑब्जॉर्व करना और उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर देना. Therefore, here W is equal to Q1 minus Q2 because temperature Q1 heat Q1 is greater than Q2 because Q1 is greater than Q2 means our source is having the heat greater than that of sink. Do you understand this?
नाउ थर्ड इज सिंक. सिंक का काम है अब्सॉर्ब करना, टू अब्सॉर्ब द एडिशनल हीट. Now you have to write down the construction, working and principle. Construction is this. Construction is this. Working कैसे करते हैं अभी बता रहे हैं आपको. And principle. Now what is the principle? Heat engine is based upon the principle of thermal equilibrium. Heat engine is based upon the principle of thermal equilibrium. Thermal equilibrium क्या होता है कि ये काम करता रहता है जब तक कि टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता. वेरियस पार्ट्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस रहता है और किसी पार्ट्स के बीच में अगर टेम्परेचर इक्वल हो गया तो इट विल स्टॉप वर्किंग. वी विल डिस्कस अबाउट द एफिशिएंसी. तो प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द principle of thermal equilibrium. Thermal equilibrium. Heat always flows from higher temperature to lower temperature until the equilibrium between the two bodies did not come down. Equilibrium between the two bodies come down and it will stop. The process stops as well as the temperature equilibrium maintained. So this is our. तो principle क्या है? It is based on the principle of thermal equilibrium. Now working.